Hey guys, good morning. It is 6929 kilometers on my Dominar Xplorer. I'm not sure आपको दिखा कि नहीं वो because of the tank bag in between. But it is 6,929 kilometers. It's almost 9:10 in the morning, and I'm finally leaving for Gujarat. That is my hometown in Kutch. थोड़े बहुत issues है वहाँ पे जो resolve करने हैं. I have to make some payments to some caretakers for our family houses, and of course वहाँ तक जा रहे हैं तो हमारे कुल देवी कुल दादा के दर्शन भी हो जाएंगे if the temples are open and if I am permitted. तो आज मेरा हॉल्ट रहेगा वडोदरा के आसपास. ऑफ कोर्स आपको अभी पता नहीं चलेगा बिकॉज व्लॉग कब अपलोड होगा पता नहीं. टुडे मंडे 28 सितंबर 2020. बाइक वॉश्ड नहीं है मेरी बिकॉज यहाँ के बारिश आ जा रहे हैं, बट प्लान है जितना हो सके जल्दी पहुँचना है वडोदरा. वहाँ पे रास्ते में व्लॉगिंग भी करूँगा एंड हो सके उतना आज के आज ही अपलोड कर दूँगा. तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो में. पासिंग लोनावाला, ये अपना फेमस होटल रामाकृष्णा. इट वॉज शट डाउन. जब सुना पड़ा है so far there was zero traffic anywhere on the road and I could cruise around at I would say 110 पे क्रूज कर पा रहा था मैं आराम से. पासिंग खंडाला नाउ. इस पर टाइम गलत है, 6:24 हुआ है यहाँ पे, पर टाइम गलत है ये, तो आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट टाइम नाउ. रास्ते पे मिला चांस तो आई फिक्स द टाइम सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड करेक्टली. एंड ऑफकोर्स आपको मेरे गोप्रो पे बहुत सारा विंड ब्लास्ट सुनाई पड़ता होगा, बट आई एम नॉट वेरी क्लैरिटी साउंड ब्लास्ट. What a view. So this is the Khandala Ghat and it's a mandatory stop for me every time over here. This is how my bike is loaded right now. Going really great. This is the Amrutanjan bridge ka slot which has been now broken down. View from top. और ये रहे अपने beautiful Khandala Ghats. So far there were no cops anywhere. कुछ checking नहीं किधर भी. Look at this family enjoying. खंडाला एनी टाइम. मैंने देखा है बहुत बार कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कहाँ से निकलना है कहाँ से घुसना है वगैरह वगैरह. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू नीड टू एंटर एंड पास थ्रू. सर मुंबई तो यहाँ से ही जाना है. मैंने जानबूझ के पूछा कॉप्स को बिकॉज दिस अपाचे वाला वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब वो कमिंग बैक. सो दिस इज़ द पैच दैट यू नीड टू एंटर एंड थोड़ी देर बाद एक दूसरा पैच आएगा जहाँ से 2 व्हीलर्स हैव टू एग्जिट. तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी. दैट पैच विल कम अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 10-15 मिनट्स इफ यू आर राइडिंग एट 50-60. यहाँ पे स्पीड अप मत कीजिएगा बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन दिस इज अ न्यू रोड फॉर यू एंड cars are at really high speed. Avoid speeding here so that you can control your bike as much as possible. So you have to exit via Mumbai, Opoli and not express side. Opoli side से बाहर निकलना. इसमें आते समय एक टनल भी आएगा. Overall is just 3 to 4 kilometers का पैच that you need to pass. तो अगर आपकी स्पीड कम है तो ये भी आप कंट्रोल करके आराम से निकल सकते हैं. न्यू ब्रिज बीइंग मेड. पता नहीं ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा. एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी सीनिक. सीनिक भी है, थोड़ा डेंजरस है स्पॉट पे, तो बी केयरफुल व्हाइल पासिंग थ्रू दिस.
नहीं, इसको पैनियर बोलते। डिक्की है, डिक्की। फ्रीजर नहीं है, फ्रीजर नहीं। तो बारिश में सामान खराब ना हो ना। तो गाइस आई हैव रीच्ड घोड़बंदर। दिस इज द चौक, फाउंटेन होटल का चौक। वो नया ब्रिज बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3+ hours to reach here. मुंबई में there was, you can see I put my raincoat, my gloves are गायब। तो there was rain on and off on the way. 2-3 बार निकाला डाला, निकाला डाला। So इसमें I lost lot of time. Plus there was a lot of local traffic too, because of which I got stuck. And ये पैनियर साइड में है तो थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है। But now I should get a clear road up ahead. There are cops out here, but I don't see any checking anywhere. So मिलते हैं आगे। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die. Just had my lunch. इसको भी lunch करवाया. Thankful. And trust me guys, I did 100, 120, 130 almost at certain patches. And after that, the bike gave me 30+ का mileage. 9 point something petrol गया. 840 rupees में. So it's almost 10 पकड़ लो. उसके बाद it had done around 324 kilometers. So very very good mileage I received on the bike even after the engine work. So अब चलते हैं आगे अंकलेश्वर की ओर. See you there. So this we are passing, I am passing the Gujarat checkpost. We will see photograph of Maharashtra checkpost behind. Now this checkpost usually has loads and loads of cops, and they keep checking one or the other bike or the car over here or the trucks that pass by and all. So today there is no one around here. Sorry, I had to put a voiceover because this one had a lot of noise. So now almost I'm headed to my destination, which is Ankleshwar. So see you there. सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ. आई हैव रीच्ड भरूच एंड कल से जो कंटिन्यू करूँगा, आगे जो रिकॉर्ड करूँगा, व्लॉग करूँगा, वो मैं अपलोड करते जाऊँगा. आई होप यू लाइक्ड द कंप्लीट व्लॉग. प्लीज टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स फ्रॉम मी एंड फॉलो करते रहिए. थैंक यू. Ride or die, ride or die, fly, know that they ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die.